Well, as we all know that the speed of a polyphase induction motor must always be less than the synchronous speed, and that as the load is increased the speed of the motor will decrease. Now the polyphase induction motor speed is always less than synchronous speed, because if its speed will be equal to synchronous speed, then no EMF will be induced in the rotor conductors and no current will be induced in the rotor conductors, so the rotor will not start. That's why the speed of polyphase induction motor is always less than the synchronous speed. Now the difference between the speed of the stator field, known as synchronous speed, and the actual speed of the rotor, means synchronous speed and the actual speed of rotor, the difference is known as the slip and is denoted by S. Though the slip can be expressed in RPM, means synchronous speed is in RPM and the rotor speed is also in RPM, so the difference will also come as in RPM, but usually it is expressed as a fraction or percentage of synchronous speed. Now fraction slip S is equals to synchronous speed minus rotor speed, actual speed of rotor, upon synchronous speed, and the percentage slip is equals to ns minus n upon ns into 100, where ns is the synchronous speed and n is the actual speed of the rotor. Now frequency of rotor current or EMF. Now when the rotor is stationary, the rotor conductors are being cut by the rotating flux at synchronous speed, means जो मैग्नेटिक फील्ड आपका रिवॉल्व कर रही है एयर गैप में, वो रोटर कंडक्टर्स को शुरुआत में जब वो स्टेशनरी है तो सिंक्रोनस स्पीड से कट करेंगे, और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 120f/p. Therefore the frequency of rotor current or EMF is the same as that of the supply frequency. मीन्स जब रोटर रुका हुआ है तो जो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी है या जो EMF इंड्यूस्ड की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम कहाँ दे रहे हैं, स्टेटर पे. बट व्हेन द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, द रेट एट विच द रोटर कंडक्टर्स आर बीइंग कट बाय द रोटेटिंग फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड. मीन्स जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. तो जो रिलेटिव स्पीड है बिटवीन रोटर एंड सिंक्रोनस स्पीड, अब वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा. और वो डिफरेंस क्या कहलाता है, स्लिप स्पीड. नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट और EMF इंड्यूस्ड बाय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटर कंडक्टर्स एंड द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द इक्वेशन rotor EMF frequency is equals to ns relative speed in RPM, which is ns minus n upon 120p. As you know, ns equals to 120f/p, so f equals to ns into p by 120 or ns by 120/p. Now the synchronous speed की जगह हम क्या रखेंगे, relative speed, तो ns minus n upon 120/p. As you know, slip S is equals to ns minus n upon ns, so ns minus n equals to sns, and s into ns equals to 120f/p. So substituting this ns minus n in equation 1, we get f dash is equals to s 120f/p into p by 120. 120 and p cancel out, so f dash is equals to s into f. Now when the rotor is stationary, then s is equals to 1. Okay, and as the rotor speeds up, s continues to lower down, so f dash is equals to s into f.